Hello everyone. So today we are going to understand what are the factors which are required to become JEE toppers with Venkat, who scored 300 out of 300 in JEE Main April Season 2. तो थोड़ा समझते हैं, बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या इस स्कोर को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी. What are the hurdles? What are the pain? What are the problems he faced during his preparation? Welcome, Venkat. Welcome. So, Venkat, पहला question, first question. Give me a brief introduction about yourself. What is your name? What is your score? And how you start preparing for JEE Main? My name is Venkat Koundinya. I have scored 300 out of 300. Full marks. Yes. So I started my preparation in 8th class. So first I covered all the easy topics to boost my confidence, and then I did difficult topics, relatively difficult topics. So, पहली चीज़ तो ये कि he start his preparation from class 8th. मुझे याद है when I was in class 8, I even start maths. I used to have a fear of solving the questions which are given in the NCERT. So the first and foremost important thing is, what is your motivation behind JEE? Why you want to become a IITian? What is the motivation behind that? I love computer programming, so I want to join some computer science branch in IIT. So you want to become a computer engineer, that's why you want to become a IITian, right? Yes. And you start preparing from class 8th. So when you are in class 10th, have you covered few part of class 11 syllabus? Yes, sir. I did. How many topics you have already covered in class 10? So roughly 40% of the syllabus was covered by class 10th itself. 40% of class 11 syllabus you have covered. Yes, 11th and 12th. So you have done integration, differentiation in class 10th itself. Yes. And in physics, what are the topics which you have covered in class 10? We have completed mechanics. We even done thermodynamics and waves. Both. Yes. Until electricity and magnetism. These things you have covered in class 10. By 10. Along with your class 10 board exam. Yes, मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, ये इंटरव्यू प्योर एकेडमिक्स के ऊपर है ना, मोटिवेशन के ऊपर मैंने इसलिए पूछा बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग एग्जाम यू नीड ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, राइट? सो दैट मोटिवेशन हेल्प यू थ्रू आउट द ईयर्स, क्योंकि एक लंबी प्रिपरेशन है कि आप बहुत दिनों तक प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद आप सक्सेसफुल बनते हो. जब आप किसी टॉपर को देखते हो कि उसके ये मार्क्स हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी प्रिपरेशन है. तो जो क्लास 8 से अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसने क्या क्या पढ़ा होगा, तो ये पूरा इंटरव्यू में मैं सिर्फ एकेडमिक्स की बात करूँगा. और ये हर बच्चे के लिए, हर एस्पिरेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे टॉपर बच्चे करते आए हैं. और वेंकट मैं अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा उससे, तो धीरे धीरे आपको बताएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, साथ ही साथ उस प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन इसने क्या ढूंढा. तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तो बहुत आराम से सुनना, पेशेंसली सुनना, इंपॉर्टेंट चीज़ जरूर नोट डाउन करना. सो वेंकट, फ्रॉम क्लास 8 यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन ऑफ JEE, राइट? एंड योर पेरेंट्स मोटिवेट फॉर दिस. Yes, they do a lot. And one more thing, just before this interview, I was asking you, you are from class 1, you are from Sri Chaitanya? Yes. From class 1 to class 12. All 12 years you are with Sri Chaitanya. Okay, and teachers also motivate you to do this? Yes, from 8th onwards. From 8th onwards. So let's start the class 11th journey. So when you are in the class 11th, what I have seen, when the student comes to the class 11th, there is a very big syllabus gap between 10th and 11th. So generally, let's say there are 100 students, I have seen more than 30% students get demotivated when they reach to 3rd or 4th chapter because of the jump in the syllabus. So have you faced that problem? When I started in 8th, I did face that problem. You have faced this problem in class 8th. Yes, because that's when I started. Which topic in class 8 you have read and you faced this problem? The very first chapter. What is the name of that chapter? In physics, it was they teach vectors and basic mathematics. So
vector and basic mathematics you have done in class 8th. Yes, in physics, as per the requirement of physics, Okay. not 2D. And you face problems in class 8. And how those problems, what are the solution which you have find out for to get out of this problem? I found this problem mainly in physics. So what I did was I read a lot of reference books. In class 8 you start reading reference book. H.C. Verma. Class 8 you have start reading H.C. Verma. Yes. Okay. And you are able to understand the H.C. Verma language? No. No? I kept asking my teacher many doubts. As he explained, I got relatively more and more comfortable. And finally, I even felt by the end of 8th class or beginning of 9th class, I started feeling comfortable in problems. So you struggle almost class 8, then from 9th and 10th, that is more comfortable with you. Yes. And when you are in the class 11, have you faced these kind of problems? No, because most of the topics were already taught. 40 to 50%, I didn't have to take it. And tell me one thing, let's say I taught chemistry, and from past 15-20 years I taught chemistry, but I have seen one thing. When I used to deliver a lecture in any classroom, student understand that when they go home and they start solving the booklet question, they find problem after understanding the concept also, right? So what is your journey? When you attended the first class, teacher explained all the concept, because in class 8, 9, 10 you already know that, you understand that concept very clearly, and then you start solving the Sri Chaitanya booklet. I have seen the booklet questions are really very good level of questions. So when you solve the first objective, second objective, let's say there are 100 objective question, are you able to solve all the 100 objective question in one shot, or you are also facing some problems? First of all, I didn't even understand the concept in the beginning 8th class. No, in class 11th. 11th, I did face some difficulty in solving problems. But as the time progressed and as the more I practiced, the more comfortable I felt. But let's say, what I am asking, let's say there is the first chapter, right? So in chemistry, the first chapter is structure of atom. So first thing in the first lecture of atomic structure, you understand the concept. While solving the question, have you faced problems? Yes. So what is the solution you have find out to overcome that particular numerical or any other? How many questions you are unable to solve out of 100? About 20 to 25. 20 to 25 questions you are unable to solve. Yes. And then you ask the teacher, or what? First, I identified the subtopics and then I again revised those from the class notes. And if I still had and then I once again attempted the problem. If I still wasn't able to solve it, I went and asked the teacher. Okay. So this is a very important thing that I always keep on saying to all students. He scored full marks, right? When he was in the class 11th and he understand the chapter, after understanding the chapter, when he attempted to solve the question, out of 100, 30% question he was unable to solve. Then what is the solution? The solution is very important for all the aspirants. The solution is read that subtopic theory, because you are unable to solve that question because the subtopic or that particular theory you are unable to understand, right? So go and read those theory. उस theory को पढ़ना, फिर से समझना, तो इससे क्या हुआ कि वो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपकी वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है. यार ये 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे से नहीं हुए, तो इसकी थ्योरी को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर से अटैम्प्ट लेते हैं. देखो इसने वही किया, उसने वो 30 क्वेश्चन उसने आइडेंटिफाई किया स्टेप 1 में, ये मेरे से नहीं हुए. अब उस 30 क्वेश्चंस में ये सब थ्योरी थी, उसने उस थ्योरी को पढ़ा. जैसे उसने उस थ्योरी को पढ़ा तो अब उसका वो वीक एरिया कम हो गया, राइट? उसने अपने वीक एरिया पे काम किया, फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हुए, देन यू आस्क द टीचर्स. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू वर्क ऑन द वीक एरिया व्हाइल लर्निंग द चैप्टर. जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो अपने वीक एरिया पे कैसे काम करते हो. मतलब सेकंड पार्ट, मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मैं पूरी जर्नी आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या है एक्चुअल में जर्नी, राइट? तो पहला चैप्टर आप पढ़ते हो, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो. नाउ हाउ डू यू प्रिपेयर द नोट्स ऑन क्लासरूम और आफ्टर क्लासरूम? After class. After classroom. So you spend time to prepare the notes. Yes. You write down all the important points, or how you prepare that particular notes?
I started it after completing the syllabus completely. In 12th I started. No, for example, when you are in, right now you are in class 11. I am asking about 11, then I will go to the 12. I want to understand the academic journey, right? So right now in your class 11, the first chapter you have completed. Now after completing the first chapter, you are going to prepare the notes. Yes. So what are the content which you are going to add on that particular notes? First I copy a few important points that I found in classwork, read a few other books, and then if I find any other important points I note them down. By solving problems, the difficulties that I faced, after asking the teacher again, if I find any other important points, I can add those. Every important point that I found, I add them. That means this is a very important point. देखो जब आप बात करते हो धीरे धीरे तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कैसे बच्चे मेहनत करते हैं. सो फर्स्ट राउंड में कभी नोट्स पूरे नहीं होते. देखो इसने बहुत अच्छी बात बोली वेंकट ने कि पहले इसने नोट्स बना लिए, देन ही आस्क्ड टीचर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, फिर से उस नोट्स में ऐड किए. व्हेन दे सॉल्व द क्वेश्चंस, फिर से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, फिर से वो उस नोट्स में ऐड किए. तो डे बाय डे वो नोट्स इंप्रूव हो रहे हैं. डे बाय डे उस नोट्स का कंटेंट बढ़ भी रहा है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर भी हो रही हैं. क्योंकि वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो रिटेन भी रहेगा ज़्यादा समय तक. आप समझ रहे हो? तो इस तरह से अगर हम नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स एक तो बहुत पावरफुल बन रहे हैं और वो धीरे धीरे बन रहे हैं तो मेरा रिटेंशन भी बढ़ा रहे हैं. सो बाय डिफॉल्ट एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है टू प्रिपेयर द नोट्स, राइट? अच्छा एक चीज़ और, वन मोर क्वेश्चन. आई गेस यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हिंदी. अभी थोड़ी देर पहले हिंदी में बात कर भी रहे थे. सो वन मोर क्वेश्चन. Once you prepare a complete notes, right? So are you also preparing some short notes from that, just so that in final time you are going to revise that? I didn't start that in class 11. Okay. But once I covered the whole syllabus by 2022 October, after that, when we started revising everything again, I prepared my short notes. So this is second notes, है ना? And we generally say to prepare your own notes. तो पहले इस बच्चे ने notes बनाए 11th और 12th में, फिर 12th में जब इसका सिलेबस ख़त्म हुआ तो फिर हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी बनाए, सो दैट उस शॉर्ट नोट्स को वो जल्दी रिवाइज़ कर पाए. देखो जल्दी रिवाइज़ क्यों कर पाए? क्योंकि जब सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाते हैं ना, तब आपकी पॉसिबिलिटी आती है इस टाइप के स्कोर की कि आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओ जेई जैसे टफेस्ट एग्जाम में और आप फुल मार्क्स को अचीव करो. सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी. बहुत बढ़िया. आप पहले एक बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हो, फिर सबके छोटे छोटे नोट्स पिक करते हो, सो दैट आप फास्ट फॉरवर्ड उसको कंप्लीट रिवीजन की तरफ लेके जाओ, राइट? एंड विच सब्जेक्ट यू फेस डिफिकल्टी एंड हाउ यू ओवरकम दैट डिफिकल्टी? The early stages I faced difficulty with physics, but as I got comfortable in concept, things were gradually improving and now I am good in physics. But the subject in which I mainly face problems is maths. So we need a lot of, especially for JEE Mains in advance, we need a lot of speed. Even the level of maths paper is relatively very tough. So we need to improve our speed and accuracy in maths. So you are doing a lot of questions to improve your math score. It is the first part. And one more thing, what are the things which you take for your preparation? I mean module. Apart from C Chaitanya, have you ever used any other modules? Be honest. I've used a few reference books and books, class notes. And you have solved all the questions of your booklet? No. No. Generally our teachers give us worksheets. Okay. So apart from Sri Chaitanya booklet, that worksheet which the teachers give, you solve all the worksheet? Yes. And maximum questions of booklet? Yes. But you are unable to solve the complete booklet questions. So what I thought कि questions are very important to solve for the booklet. But जैसा आपने देखा कि यार सारी बुकलेट के क्वेश्चंस ये भी टाइम शायद मैनेज नहीं कर पाए इतना पढ़ने के बाद भी, और सारे क्वेश्चंस इसने भी सॉल्व नहीं किए, काफ़ी इससे भी छोटे, लेकिन इसने वर्कशीट पूरी तरह से सॉल्व की. एंड एक चीज़ और जो हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कि किसी एक बुकलेट को जब आप सॉल्व करते हो उसको पूरा फोकस करो. बहुत सारी किताबों को अगर आप लेते हो, बहुत सारी चीज़ें लेते हो, तो आप उसको कभी कवर नहीं कर पाते. तो एक बुक उसको अच्छे से कंप्लीट करना, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. Now one more thing, one more problem which I have seen many problem are facing, that is the distraction. Distraction may be of many things. One of them, majority of students face distraction is social media. So are you Instagram, Facebook, YouTube?
I don't have any account in any of the social media sites. I've never used anything right from my childhood. You are not in Facebook, you are not in Instagram? No? No. तो खैर आपने और भी बहुत सारे टॉपर्स बच्चों से सुना भी होगा, और ये हम बार बार अपने सेशंस में हम बना भी होगा, और ये कि सोशल मीडिया में से दूर रहना चाहिए. आप देख सकते हो एक अच्छा एग्जांपल, ही वाज नॉट इन एनी सोशल मीडिया. हैव यू वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब? I watch videos related to motivational stories. Apart from that, nothing. Nothing. And whenever I have some doubts, I use YouTube videos. फाइन. सो यूट्यूब में भी हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड ऑन यूट्यूब? Very less negligible. नेग्लिजिबल. सो यूट्यूब के वीडियो भी इसने कभी देखे नहीं 2 सालों में. दैट मीन्स इससे क्या निकल के आता है? मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब के वीडियो आप मत देखो या सोशल मीडिया में मत जाओ, बट जब आप किसी टॉपर से पूछते हो तो वो एक टर्म यूज़ करते हैं, फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स. तो ये जब मैं आप ये बड़े शब्द शायद समझ में नहीं आते कि यार फोकस का क्या मतलब है. तो व्हाट आई फील, फोकस का मतलब ये है कि आपका एक गोल है कि आपको कोई भी अपनी लाइफ में एग्ज़ाम में क्रैक करना है, राइट? जैसे आपका गोल है कि आप जेई को क्रैक करना चाहते हो, राइट? तो उस गोल के अलावा ना आपको कुछ नहीं दिखता, तो आप पूरी शिद्दत से उसके लिए पढ़ते हो. जब आप उसी के लिए पढ़ रहे होते हो तो फिर आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एंड यू लव एंड इन्जॉय. मैंने इससे अभी इस इंटरव्यू से पहले एक चीज़ पूछी थी, हैव यू फेस एनी प्रेशर और बर्डन ऑफ सिलेबस? तो इसने मुझे बहुत अच्छी बात बोली. आई विल रिपीट द सेम थिंग विच वी आर टॉकिंग. व्हेन ही वाज इन क्लास 8 तो उस समय पे इसको थोड़ी प्रॉब्लम आई कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस क्लास 8 एक साल इसको आई. 9th and 10th, if I am not wrong, in 9th and 10th you have not faced that problem, right? Faced it, but very little compared to it. And in class 11th and 12th, have you faced the pressure of syllabus? No. No? Not much. तो 11th और 12th मतलब आप जब वो प्रेशर फील करते हो तो उसका एक टाइम होता है. जब आप उस टाइम पीरियड से ऊपर यानी उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हो तो फिर वो प्रेशर फील नहीं होता, राइट? तो आपको वो टाइम देना पड़ेगा. लेट मी अंडरस्टैंड योर टाइम टेबल. What you do when you wake up, when you go to your Sri Chaitanya Institute, and how many time you spend there? What is your complete day schedule? Our college starts at 6:30 in the morning. 6:30 morning. Yes. Okay. So I go there by 6:30, and first I guess we have 2 slots of 2 hours for every subject. 4 hours for math, 4 hours for physics, and 4 hours for chemistry. 4 hours in one day. 4 hours for each subject, totally 12 hours. 12 hours. So in these 12 hours, teachers teach you, and they also give you a worksheet to solve that. And they also clarify doubts. Okay. If you have any doubt, they clarify your doubts. Okay. They also motivate you. Great. And you come back home at 7:30. 10:30 in first year and second year. 10:30 night. 10:30. After that, But I go home and I sleep. Talk sometime with parents and also. and your parents keep on motivating you, Yes. Whenever they get time, whenever I'm with them, they. and there are some time when you feel that कि यार बहुत ज़्यादा हो गया अब और बहुत प्रेशराइज है. ऐसा टाइम कभी आया? Yes, many times. Many times. So how you motivate yourself? Just relax for a while, again cut down all those negative thoughts which we get, all those thoughts which decrease our confidence. Have you shared that with your parents that I feel pressurized and the syllabus is very high, I am not getting score? Yes. So what your parents says to you? Just focus on things that you have to do. If it's difficult for you, it might be difficult for many more people. You don't need to bother really too much about those. So just remove all those negative thoughts and stay positive. I think things will fall in place. That is a very good things. And what I feel, और आप जब किसी टॉपर की जर्नी से जाते हो, मैं आज एकेडमिक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में आपने देखा होगा लोग टॉपर की नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड बहुत चीज़ें समझते हैं, बट आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वो इस बच्चे ने भी फेस किए. बस डिफरेंस क्या है कि शायद ज़्यादातर बच्चे 11th में वो फेस करते हैं, इसने वो क्लास 8th में की और 8th में की, फिर 9th में की. और जैसा कि ये कह रहा है कि आई ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स. जब मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, मेरे को भी प्रॉब्लम आती है,
कोई कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट मैं भूल रहा हूँ, और ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो इसके पेरेंट्स ने इसको बहुत अच्छी बात बोली, राइट, कि कीप ऑन वर्किंग, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, जस्ट वर्क हार्ड। तो मेहनत करते जाओ तो शायद इस प्रॉब्लम का सलूशन भी निकल आएगा। और इसका टाइम टेबल बहुत रिगरस है, ये बच्चा सुबह 6:30 से 10:30 तक रहता है और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, और ये कोई इजी चीज़ नहीं है शायद। व्हेन यू आर एंटरिंग इन श्री चैतन्य एट 6:30, लीविंग 7:30 और 8:30, it is a very long time, right? So sometime you get tired and sometime it might possible that you are losing interest in the lecture. ऐसा कभी हुआ? Yes. हुआ? And the teacher keep on motivating you for that? Yes, many times when I felt like that, we go and tell the teacher a problem, they'll motivate us again. Yes. Great. And which subject you are facing problem? Maths. And let's talk about one chapter, any one chapter which you actually face problem, and lot many students are also facing the problem. So how to overcome that difficulty? Let's say I am weak in aldehyde and ketone, or I am weak in organic chemistry. Generally student says that I am weak in inorganic chemistry because there is a lot of things to read, right? Somebody was saying that I am weak in mechanics, right? So every student has some weak points. Similarly, you have also some weak points. I want to understand what is your strategy to overcome that weakness? Just keep working more on first identify those properly to the level of subtopics, not just the topic, the actual points where you are suffering in that topic, and then work more on those minute points where you are suffering. Great. अब आप ये देखो, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ निकल के नहीं आती है जिसका हम इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा कोई ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी और बहुत सिंपल सी बात है। देखो इसने क्या कहा कि अगर मैंने इससे ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है और उसको आप कैसे ओवरकम करते हो, है ना, तो इसने क्या कहा कि पहले उस टॉपिक का वो छोटा हिस्सा निकालते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इफ़ द स्टूडेंट आर सेइंग दैट आई एम वीक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोबडी कैन हेल्प। इफ़ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, specifically in reaction mechanism, specifically in even reaction mechanism, then there is a problem and there is a solution. तो वो even mechanism समझ सकता है, राइट, बट अगर आप पूरे सेगमेंट कोई प्रॉब्लम बोल दोगे तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात इसने बोली है कि आई फाइंड आउट दिस इज माई वीक एरिया, दिस सब टॉपिक आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। तो उस सब टॉपिक, अब सब टॉपिक, लेट्स से देयर इज एन, यू हैव आइडेंटिफाइड दिस इज अ चैप्टर वेयर आई जनरली फेस प्रॉब्लम and there is an error in that particular question also, and I have identified that subtopic. Then what you do? You read the theory, or what you do, or solve as many questions as you can? I first read the theory, and then if there is any backlog in the previous assignments, first I solve those, then again revise those important points that I found in the assignment, then I go to other problems. Have you faced that after reading the theory also you are unable to understand that concept? Yes, few times. Then in that case I go to the teacher and I get it clarified from the teacher. Okay, if once you read the textbook theory and you are unable to understand, then you go to the teacher, right? And then you specifically ask that this theory I am unable to understand. Yes, this is a very good thing. Generally what happened, अगर कोई मेरे पास आए या कोई किसी भी टीचर के पास आप जाते हो और आप ये कहते हो कि ये पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम ही मेरी समझ में नहीं आया, तो टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन ना, अगर आप ये कहते हो कि मुझे आयोनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन मैंने 4-5 बार पढ़ लिया और अब मेरी समझ में नहीं आया, तो जब आप टीचर के पास जाओगे तो उसका 1-2 लाइन भी बहुत कुछ समझाएगा आपको। लेकिन अगर आप एकदम ब्लैंक होके जाओगे कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, आप पढ़ा दो, तो वो प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। तो देखो इसने बहुत अच्छी बात क्या बोली कि पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा, एंड आई फेस ए प्रॉब्लम इन ए पर्टिकुलर एरिया, आई पिक्ड दैट पर्टिकुलर एरिया, है ना, एंड आई रीड द थ्योरी, स्टिल आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। देखो इसके भी समझ में नहीं आया था, इसने पढ़ा, है ना, समटाइम यू रीड द बुक, रीड द थ्योरी, बट स्टिल यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, देन ही गोज टू द टीचर। तो जब आप एक एफर्ट्स मारने के बाद टीचर के पास जाओगे तो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन टीचर को भी बताने में बहुत अच्छा लगेगा, और टीचर जब बताएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बच्चों को ये समझना कि प्रॉब्लम्स सबके पास होती है, इसके पास भी हैं, राइट। अगर इसकी एक्यूरेसी ऐसी है कि इसने सारे क्वेश्चन सही किए, फुल मार्क्स लेके आए जेईई जैसे एग्जाम में,
बट वो प्रॉब्लम्स को उसने आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व किया है और काफ़ी मेहनत भी की है ना। अगर एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर बच्चे पूछते भी हैं, मैं इससे पूछता हूँ कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में कितने आवर्स पढ़ते हो? Class 11 till approximately 12 hours every day. Every day 12 hours you need to study. Yes. And in 11th and 12th, do you have any vacation? Pongal holidays and all that. Pongal holiday, that is one day. And rest, every day you go to class, your attendance is 100%? Whenever I don't feel well, I don't go, but rest I go. Rest you always go. Okay. And how you handle, do you have any backlog? Have you faced any problem that in right now I am in class 12 and there are a lot of topic in the class 11 which I forgot or which I am not getting the confidence to solve? Have you faced that kind of problem? If we keep forgetting topics again and again, there's nothing, we just keep revising them again and again. When you revise, means there's a current topic is going on or in all the 3 subjects, right? And there are the old topic. So how you manage the time? Because you have to read the current topic. So let's say in physics, chemistry, math, 3 chapters are going on. That are the current topics. And in the class 11, there are 25 chapters are there. So how to revise those, when you revise those 25 chapters and how you balance the current topic with the old topics? In class 11 and 12, I did not get much time for revision of old topics. But once our syllabus got completed, I revised the current topics for almost about 3 to 4 days a week. The rest 2 to 3 days I gave to previous topics every week. That means after October you start revising class 11, but when you are in the class 12, you are unable to get the class revision of class 11 topic. Yes. And is there any test of your class 12 on which class 11 syllabus is also asked? After the syllabus is done, they keep conducting tests on the whole syllabus. But for that particular test, you have to prepare for the class 11 chapter also. In the first few exams, might face difficulties, but as the time progresses, we even get habituated for writing those complete syllabus. Okay. So you are comfortable with the class 11 slowly. Yes, slowly we get after writing many of them. And how many times you have revised after October? For every mock test you do entire revision. What is the revision strategy? Every week 2 to 3 topics. If I revise some 3 topics this week, I'll revise the next 3 topics next week. Like that in like and that. Generally you revise from your notebook. Yes, notebook and short notes. Short notes and notebook. And how you remember inorganic chemistry reactions? Generally students face boring part because they have to memorize all these things. Teachers help you how to remember, or your notes help you? Where it's possible, our teachers give us some short techniques to memorize things. But major help, if we write a short notes, then we can complete revision in very less time compared to notes. Okay, so you have well defined notes for your inorganic chemistry. Okay, and for maths, do you solve the worksheet and the booklet questions, or apart from that you have solved the reference books questions also? Because you told that maths is the weaker part. Majorly worksheets, and if I am done with all the worksheets, I solve reference books. Okay, and how your JEE Advanced preparation is going on? What are you doing right now for JEE Advanced? Just trying to bring that exam environment into study hours so that I can feel relatively easy in exams. And for that I am doing time-bound practice, especially for maths. For physics and chemistry, physics I am revising concept and I am even practicing, because conceptual clarity is more important for physics. Chemistry, I am just revising everything once. Complete revision. Yes. And you are solving the questions from booklet itself. Yes. And how many marks in the mock test of JEE Advanced right now you are scoring? For about 360, maybe 280 or 290. 280 or 290. That is a good score. And are you satisfied with that particular marks? Are you identify that these are the marks which I have missed? Yes. And what are the topics are common, or what? Have you identified what are the mistakes you are doing in advance? Yes. You have identified, and you are working on that? Sometimes the mistakes will be silly mistakes. So it will be just to identify the type of silly mistakes that we are doing and then
consciously we have to try to avoid those. Fine. And if any subtopic is common among all the mistakes, then we have to once again revise that again, follow the same cycle again to revise, practice, and get doubts clarified if there are any. That would be great. So I think I have addressed a lot of questions, and your last message to your juniors, what they have to do, one, and what they don't have to do and don'ts. Always stay motivated and never feel disappointed or depressed if you get less marks or something. Try to avoid distractions as much as possible. ग्रेट वेंकट. सो आई गेस मैंने वो सारे क्वेश्चंस निकालने की कोशिश की जो हर बच्चों के होते हैं. मैंने वो क्वेश्चंस लिए जो जनरली बच्चे पूछना चाहते हैं, और आप इसको जैसे अभी देख रहे हो ये स्क्रीन के बाहर भी वैसे ही है. बहुत कम बोलता है, बहुत फोकस्ड है, बहुत प्यारा बच्चा है. और जैसे जैसे मैं इससे पूछता गया, इसने ऑनेस्टली हर चीज़ का आंसर दिया. एंड जो इसको प्रॉब्लम फेस हो रही थी इसने वो भी बताई. तो बहुत अच्छा लगा इससे बात करके, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशनल सेशन भी है कि वो समझ पाएँ कि क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, बच्चे कैसे करते हैं और कितनी हार्ड वर्क की ज़रूरत है. तो जब भी आप टॉपर को देखते हो तो उसके पीछे का जो हार्ड वर्क है वो मैंने कोशिश की कि आपको विजुअलाइज़ करा पाऊँ. कई मिस्टेक्स होती हैं जो नॉर्मली हर बच्चे करते हैं, वैसे ही वेंकट ने भी किए, और कैसे उसका सल्यूशन ढूंढा और कैसे आगे बढ़ा. आई होप ये सब मोटिवेशनल सेशन टाइप का नहीं है और एक इन्फॉर्मेशन सेशन है जिससे हर उस बच्चे तक ये चीज़ें पहुंच पाए जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो थैंक यू वेंकट, थैंक यू वेरी मच. Thank you. थैंक यू.